Sayyid Bikram, President of the National Hockey Federation, Professor Dr. Bushra Mirza, Vice Chancellor, Lahore College for Women University, Lieutenant General Sayyid Arif Hussain, President, Pakistan Olympic Association. Please give a big round of applause to our honorable guest. OCA PO seminar empowering athlete right now conducting in the Lahore College for Women University with collaboration of Pakistan Olympic Association. The basic purpose to organize the seminar to make the athlete empowered, support athlete development in their career. Athlete empowerment is all about sharing power and develop high-level motivation. It's really great honor for Lahore College for Women University to collaborate with Pakistan Olympic Association. Let us start the session with the name of Allah. I would like to call Ms. Iram Zahoor for the recitation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار صدق الله العظيم. Jazakallah. May I request to all please raise for national anthem. Shine
I would like to request Muhammad Aman, Chairman of Pakistan Olympic Association Athlete Commission, please come on the stage and share the words. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तैयब इकराम साहब, मेंबर ओलंपिक सॉलिडेरिटी कमेटी, वाइस चेयरमैन OCA एथलीट कमीशन, प्रेसिडेंट पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जनरल आरिफ हसन, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन खालिद महमूद साहब, वाइस चांसलर बुशरा मिर्ज़ा लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, दीगर ओलंपिक फैमिली, ओलंपियंस, वर्ल्ड चैंपियंस, हमारे एथलीट्स को दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। मैं लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी का, इंतज़ामिया का, मैडम आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिस तरह का मिसाली इंतज़ामात यहाँ पर हमें मिले, जिस तरह आपकी टीम ने छुट्टियों के बावजूद हमें यहाँ पर सपोर्ट किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। थैंक यू वेरी मच। मैं हमारे जो लेक्चरार हैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जिस तरह पिछले कुछ दिनों से हमें इतना ज़्यादा एजुकेट किया, हमें इतना ज़्यादा एम्पावर फील करवाया, हमारी लीडरशिप स्किल्स को बढ़ाया, इसके लिए मैं अपने लेक्चरार्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपकी वजह से इस जो तकरीब को, इस सेमिनार को चार चांद लगे हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आपकी एफर्ट से, आपकी लीडरशिप से पाकिस्तान को जो IOC स्कॉलरशिप मिले हैं, उनमें हमारे जो खिलाड़ी हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है। तमाम कॉमनवेल्थ के जो मेडलिस्ट हैं जैसे अर्शद नदीम, नूर भट्ट, मैं खुद और दीगर जो खिलाड़ी हैं, ये तमाम वो खिलाड़ी हैं जो IOC स्कॉलरशिप होल्डर हैं। तो सर ये आपकी एफर्ट्स की वजह से ये मुमकिन हुआ है। थैंक यू वेरी मच सर। मैं आज के तारीखी दिन अपने एथलीट से 3 प्रॉमिस लेना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि हमने इतने दिन जो एफर्ट की है, जो इतने दिन हमने सीखा है, तो इसको अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं करना, हमने एम्पावर फील करना है। हमने 3 प्रॉमिस करने हैं, जिनमें से पहला प्रॉमिस मैं ये लेना चाहता हूँ कि हम डोपिंग फ्री रहेंगे। हम जो हमारा इन्वायरमेंट है वो ट्रांसपेरेंट होगा। हम ना खुद कोई खराबी करेंगे, ना किसी को करने देंगे। क्या आप मेरे साथ एग्री करते हैं जी? दूसरा मैं प्रॉमिस आपसे लेना चाहता हूं कि अगर कहीं पर हमारे राइट्स की वायलेशन हो, कहीं पर हमें हिरासमेंट का, अब्यूज का सामना करना पड़े, कहीं पर हमें लगे कि ये हमारे जो हक हैं इनकी खिलाफ वर्जी हो रही है, तो हम इसको रिपोर्ट करेंगे। क्या आप मेरे साथ हैं? और तीसरा और बहुत अहम जो चीज है कि हमने जो नॉलेज यहां से हासिल किया है, जो हमने यहां से सीखा है, अब हमारी सबकी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने फेलो एथलीट्स के साथ इसको शेयर करें। हम अपनी अपनी फेडरेशन में जाके इसको शेयर करें ताकि ये नॉलेज हमारे फेलो एथलीट्स तक जाए। तो क्या आप इसको शेयर करेंगे? थैंक यू वेरी मच। जनरल साहब, मैं अपने तमाम एथलीट्स के बिहाफ पर आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि 2 दिन 3 दिन जो हमने इतनी एफर्ट की, तो हम तमाम एथलीट्स की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि जितनी भी तमाम फेडरेशंस वर्किंग कर रही हैं, उनमें एथलीट कमीशन को अब होना चाहिए। जिस तरह हमें IOC की जो इनकी जो लवाजमात है उसको पूरा किया जाए, और ये जो एथलीट कमीशन है हर फेडरेशन में होना चाहिए। आप एग्री नहीं करते यार? और दूसरी सा रिक्वेस्ट ये है तमाम खिलाड़ियों की तरफ से कि हम ये चाहते हैं कि ये जो सेमिनार करवाया जा रहा है, ये हर फेडरेशन को चाहिए कि वो अपने अपने फेडरेशन के अंदर इस तरह का सेमिनार लाजमी करवाए, और उसके लिए जो एकेडमिक सपोर्ट है वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन प्रोवाइड करे। सर
मैं आखिर पे एक दफ़ा दोबारा जना साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये आपकी लीडरशिप की वजह से, सेक्रेटरी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी अनथक मेहनतों की वजह से आज ये दिन देखा है। आज हमारे खिलाड़ी इतना ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं और मैं आज पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ना सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया की उन एनओसीज में शामिल है जो अपने खिलाड़ियों को बेइंतहा सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ये सपोर्ट, ये मोहब्बत, ये शफकत जारी रहेगी और इंशाल्लाह हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह फ्यूचर लीडर बनेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Mohammed Anam sir, for sharing the thoughts being the review of all athletes regarding the OCA POA seminar empowerment athletes. Now display a short video. First Athlete Forum 2021. Talking about the athletes, I have the honor to now request my co-host for the forum, Chairman Athlete Commission, Commonwealth Gold Medalist, World Champion Beach Games and Pride of Performance 2019. आमतौर पर खिलाड़ियों को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है अपने करियर में, जिनमें लैक ऑफ नॉलेज, ट्रेनिंग से रिलेटेड इश्यूज, डाइट से रिलेटेड इश्यूज, डिस्क्रिमिनेशन, अब्यूज एंड हरासमेंट और करियर ट्रांजिशन जैसे मुश्किल फेजेस से गुजरना पड़ता है। इन 2 दिन के सेमिनार में हमारा जो एम है वो ये है कि जो फासला मैनेजमेंट और फील्ड्स के दरमियान है उसको कम। And he has sent a special message for the NOC, for the chairman of the Athletes Commission, the President IOC, Mr. Thomas Pack. Let's together for the 4th Athletes Forum of the NOC Athletes Commission. I would like to add my heartfelt congratulations to all the Pakistani athletes. जो एथलीट्स यहाँ पे नहीं हैं, हम उनको भी जाकर बताएं कि हमने इस फोरम से ये चीज सीखी है। जब ये प्लेटफॉर्म मिलते हैं, इसके ऊपर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। साइन करते हैं कि जी हम वाडा के बोर्ड के ऊपर एक्ट करेंगे और उसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अपनाएंगे। हैसियत आपकी वजह से, और अगर इफ यू आर नॉट टेकन केयर ऑफ, अगर आपकी वेलफेयर का हम ख्याल नहीं कर सकते तो फिर हम बिला मकसद है सारे के साथ। और हमारे ह्यूमन राइट्स क्या है? वी नीड इंटेग्रिटी, वी नीड प्रॉस्पेरिटी, वी नीड रूल्स ऑफ लॉ, जस्टिस, पीस। For sexual harassment, no place for sexual abuse, no place for humiliating initiation routines. The volunteers and the telephone number and the site you can see prevention harassment. हमारे पास कोलीग्स इधर बैठे हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी स्पोर्ट्स में लगा दी। डॉक्टर्स इधर बैठे हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी, आप स्पोर्ट्स लीडर आज इधर बैठे हैं
लेकिन किसके लिए? फॉर एथलीट्स. And I hope we will in future be working in a manner where you deliver while we support. Thank you very much. अल्लाह करीम हमारे हामी नासर हो. पाकिस्तान फाइनल. I would like to request Mr. Hamdan Nazir, who is going to present the presentation on safeguarding athlete forum harassment and abuse in sports. Please give a big round of applause to our presenter. He is CSP officer right now working in Pakistan League. With the permission of Chair, we'll start with a pre-quiz. I don't have to introduce myself, it's already written, whatever. But the objective of today's talk is to, share some knowledge that I have learned during the course of last couple of years. So, the pre-quiz has started on your mobile app. So, this quiz would be again there towards the end of this communication with you, but I would like to see the difference, what you learned in the process of today's this interaction. So first you go ahead with this quiz, and then we go ahead with the presentation, my presentation, and then we'll go through the quiz again, and we'll figure out what are the learning outcomes. There are only 12 questions, I guess, and you will be having 3 minutes to, complete these. Very simple. We're left with 60 seconds. Okay, so Muhammad Abdullah from sailing. Okay, Wajiha Abid from basketball. Great. And Zaifa Batul from athletics. Okay. All right. Pretty encouraging, but obviously slightly off the mark. But let's see what happens towards the end of the session now. Okay.
So, again, everything is written, I don't have to explain. But one thing I would like to share that my thesis during my master's in sports organization management on Olympic Solidarity Scholarship was on abuse and harassment in sports. So I thought to, today when I was given this opportunity, and I'm really, truly thankful for this opportunity to have interaction with you. So I thought of talking over the same subject because gradually it is becoming a focal point not only in the world, also in Pakistan, and we will just discover why. This is how we are going to have interaction. This would be basically the flow of interaction. We'll have a brief introduction and then we'll just review the society that we are living in. What is going on, what is happening around generally, not specifically about sports. Then I would try to explain some basic concepts that are involved in abuse and harassment and non-accidental violence. I understand this NAV or non-accidental violence is not a very common term, but for athletes and for other participants also, it is important to understand how non-accidental violence is different from violence. And then we'll figure out the actual extent of abuse that is happening in the sports world and also in Pakistan. We'll try to reach some conclusion, evidence-based, data-based, statistics-based, and then we'll try to go through some other models also, which are there for athletes' protection in the US and the UK, and learning from those and learning from our data, we would see where we can go, where we are, and what is the roadmap, where we want to go and where we stand right now. And towards the end, of course, there would be again the same MCQs you'll be asked. So be attentive. Let us see who scores the best. Basically, abuse and harassment has been existing in sports. Maybe due to the physical nature of this whole thing that we call sports, it has ever been there, but unfortunately people would consider that because it's a very good thing, it's sports, so it is all happy things, so there won't be any abuse and harassment. So we kept our eyes closed, kept our eyes shut. I happened to talk to one of the most prominent and arguably a living legend, a scholar on the subject from Norway. And she told me about a story. They went for research in England and they went to UK athletics and they wanted to interview some top athletes regarding abuse and harassment. And they were never given approach to those athletes by the federation because on the pretext that everything is so good, it's sports, it's happening in England, so nothing to worry about. And they were just kept at a distance from the athletes. They could never interview them eventually. Same ideas, same thing. We kept believing the sports is good, there will be no abuse, no harassment, but what happens actually? For decades, Nasser's employers focused on their reputations and failed to safeguard the young women in their care. When USA Gymnastics got a complaint about Nasser in 2016, the organization paid the gymnast $1.25 million to stop her from speaking about the abuse. Complaints about Nasser's treatments reached officials at Michigan State University as early as 1997, the Detroit News has reported. That's 20 years before the prize doctor was terminated.
MSU has said that no one at the university believed that Nasser committed sexual abuse prior to the newspaper reports in the summer of 2016. Nasser's victims say that if the university had investigated the first complaint, scores of young girls may have escaped the doctor's abuse. Larry Nasser did not arise in isolation. Rather, we saw the worst sexual assault scandal in history unfold because a predator was left in power for decades. Despite warning signs, despite red flags, despite direct reports of assault. So it's just a short clip of Larry Nasser, one of the most celebrated doctor in sports in the US. ये US की जिम्नास्टिक टीम को हैंडल करता था और for more than 20 years he kept abusing athletes and nobody was able to kind of get him in a net. लोगों ने रिपोर्ट करने की कोशिश भी की, डेफिनेटली कुछ जिम्नास्ट ने रिपोर्ट करने की कोशिश भी की 90s में, लेकिन या तो उसको स्नब कर दिया गया उन रिपोर्ट्स को या फिर उनके साथ they entered into a deal and some kind of financial deal or something. So the issue did not pop up. It popped up only in 2016-17 जब पता ये चला कि अब मामला हद से निकल चुका है, हद से बढ़ गया है. तो जब ये केस सामने आना शुरू हुए, when people realized कि ये तो बड़ा फिर there was in the background there was Me Too movement also. The culture was changing around the world and the same thing happened in the sports culture. और gradually people realized कि नहीं कोई मसला नहीं, इसमें बोलना पड़ेगा. When people started speaking out, so this case of Larry Nasser, जब लोगों को पता चला, this case became the turning point in the history of abuse and harassment in sports. It's a watershed moment. यानी ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से फिर रास्ता बदल के अब हिस्ट्री चेंज हो गई है. अब सब लोग इस पे बोल रहे हैं, इस पे लॉ बन रहे हैं. पाकिस्तान में भी थोड़ी रिसर्च इस पे शुरू हो गई उसके बाद से. इसमें जो इस केस में जो टेक